So hello everyone. At this class I'm going to discuss about the trigonometric or circular functions. हालांकि मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वो रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर लिया, दैट इज डिग्री एंड रेडियन मेजर का रिलेशन जो है वो रिलेशन के बारे में डिस्कस किया. How to convert degree to radian and radian to degree measure, those things I have discussed with examples also. Now today I am going to discuss about trigonometric functions, that is about the 6 functions. Trigonometric functions में क्या क्या होता है, like sin theta, cos theta, tan theta and they are reciprocals. So sin, tan, cos वो तीनों का reciprocal मिला के total 6 functions होता है. So today I am going to discuss about those functions and few theorems, relations also. Okay, so क्लास 10 में ऑलरेडी अबाउट साइन कॉस टेन ये सब के बारे में तो आइडिया है, ये कुछ नया चीज नहीं है. जस्ट बेसिक थिंग्स यू नो, लाइक साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है. कुछ रिलेशंस में आज डिस्कस करूंगा विथ डिराइवेशन. ठीक है, सो सपोज XO x dash and YO y dash be the two coordinate axes. Okay, XO x dash and YO y dash be the two coordinate axes. Draw a circle which cuts x axis at point A, y axis at point B, x dash at point A dash and y dash at point B dash. Okay, draw a circle which cuts the x axis at point A, y axis at B, x dash at A dash and y dash at B dash. Let O be the center of the circle. Okay, it is a unit circle. Okay, unit circle का मतलब होता है कि जिसका रेडियस 1 होता है. Unit circle means a circle with radius 1 unit. Okay, this is a unit circle. So if this one is a unit circle, which means the radius will be 1. So clearly we can say that the coordinates of A will be 1, 0. Yes or not? Because the point A lies on x axis. Since the point A lies on x axis, so which means y coordinate will be 0. Why the x coordinate is 1? Because this part is the radius only ना. Radius 1 होगा unit circle का, मैं पहले ही बोला था. Unit circle means a circle with radius 1. So that's why x coordinate of A is 1. Okay. Let us consider a point P whose coordinates say x, y on the circle. Let P be any point on the circle. Join OP. Let P be any point on the circle. Join OP. Suppose the point, this point is a moving point. Okay, it is not a fixed point. The point P is a moving point. It is not a fixed point. एक जगह में नहीं रहता है. Moving मतलब ये घूमता रहता है. So suppose the moving point P starting from A. Suppose the moving point P starting from OA, rotating in anti-clockwise direction. Suppose the moving point P starting from OA moves along the positive y-axis in anti-clockwise direction. So अगर anti-clockwise direction में move होगा तो we can consider the angle will be positive. Yes, angle positive कब होता है? जब anti-clockwise direction में move होता है. अगर clockwise direction में move होगा तो angle will be always negative. So that's why we can consider this angle be theta. Okay, once again I am repeating, the point P is a moving point. This point starting from OA, it moves along the y-axis in such a way that angle is always theta because it is in anti-clockwise direction. Okay, it is in anti-clockwise direction. Draw a perpendicular M. Draw a perpendicular PM on OX.
ओके, एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर लिया PM ऑन OX, राइट? ओके, सो since XO X dash and YO Y dash be the two coordinate axes and P is the moving point which moves in such a way that it makes always an angle theta, such that we can write angle AOP is equal to theta. Angle AOP, this is equal to theta. Okay, angle AOP is equal to theta. Therefore the six functions, or you can say the six trigonometric functions may be defined as, look at here, cos theta is equal to, this is angle theta, so cos theta is equal to, what is cos theta? Base by hypotenuse. Yes, base by hypotenuse. This line is along x axis, so this part is say x. Okay, this is say small letter x, and this part is say small letter y. This is small letter x, and this part, that means between O and M I have written small letter x, and between P and M I have written small letter y. So cos theta is equal to, we know, base by hypotenuse. Base, this is base, right? From this right angle triangle, from this triangle POM or MOP, we can say that base is x, that is OM by hypotenuse क्या है? OM by OP. Yes or not? Cos theta is equal to base by hypotenuse, that means we can write OM by OP. Now what is OM? OM means it is the length of OM is x. We have considered the length of OM be x, so x by, what is OP now? What kind of circle is this one? This is a unit circle, and unit circle means radius हमेशा 1 होता है. So OP जो है, ये तो radius है ना, so radius 1 है, so x by 1, that is equal to x. So cos theta is equal to x. ये बात याद रखना है, क्योंकि मैं अभी रिलेशंस डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं, इसीलिए मैं पहले cos theta, sin theta, tan theta के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है, so cos theta is equal to x. Now if cos theta is equal to x, therefore sec theta is equal to, sec theta is the reciprocal of cos theta. Sec theta is the reciprocal of cos theta. So if cos theta is equal to x मिला, तो sec theta is equal to ये 1 by x होगा, provided x is not equal to 0. बिकॉज अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट? ओके, सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट? सॉरी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस अगर बोलेंगे तो क्या मिलेगा? तो फिर PM by OP. So PM means the length of PM, we have considered it as y by 1. This is equal to y only. So if sin theta is equal to y, then cosec theta is equal to, तो फिर क्या होगा? Cosec theta is the reciprocal of sin theta, which means it is 1 by y, provided y is not equal to 0. Yes, provided y is not equal to 0. Next will come tan theta. Tan theta means perpendicular by base. Perpendicular is here PM. Perpendicular is PM. Base is OM. So PM, the length of PM, I have considered it as y. And OM means x. Y by x. Yes, provided x is not equal to 0. Similarly, cot theta is the reciprocal of tan. So फिर this one will be x by y, provided y is not equal to 0. Okay. So this is all about the 6 trigonometric functions. Okay, this is all about the 6 trigonometric functions. So from this diagram, we can write like this: cos theta equal to x, sin theta is equal to y, tan theta is equal to y by x. So if you know these 3 functions, you can write their reciprocals by your own only. Okay. So अगर ये पार्ट याद रहेगा तो now I am going to give some theorems, or you can say some relations. 3 relations now I am going to give. रिलेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रिलेशन नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आई विल एक्सप्लेन कैसे 1 आया, ये एक्सप्लेन करूंगा मैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1.
then sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Number 3, cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. Cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. ये 3 रिलेशन याद रखना है, न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं हम लोग, यूज करना पड़ेगा, कर सकते हैं मतलब यूज करना पड़ेगा, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन में क्या कौन सा न्यूमेरिकल में यूज करना है, ठीक है। बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ ये अभी मैं डिस्कस करूंगा। Once again I am repeating, the value of cos theta is x, the value of sin theta is y, the value of tan theta is y by x. तो रेसिप्रोकल भी याद रहेगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज थ्री रिलेशंस, these three relations. Now from the right angle triangle, OMP, from the right angle triangle OMP, look at the diagram here, from the right angle triangle OMP, we can write cos theta is equal to x, sin theta is equal to y, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया। ओके, नाउ फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल यूज पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, बेटर यू राइट दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होगा, OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू OP स्क्वायर, yes or not? From the right angle triangle OMP we can write OM square plus PM square is equal to OP square. What is OM? OM का लेंथ क्या लिया, x, so x square plus PM, what is the length of PM? Y, that is y square, this is equal to OP. OP means the radius of the circle, since it is a unit circle, radius is 1 and the value of 1 square is 1 only. What is x? X means cos theta, so cos square theta. Y means sin theta, that is sin square theta, this is equal to 1. Okay, so this is the first relation, cos square theta plus sin square theta is equal to 1, or sin square theta plus cos square theta equal to 1. Okay, this is say number 1, equation number 1, or you can say formula number 1. अभी formula number 2 कहाँ से derive हुआ? If you know how to prove formula number 1, you can prove formula number 2 as well as 3 also. Okay, तो formula number 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, divide equation 1 by cos square theta, divide equation 1 by cos square theta. चलो क्या मिलता है देख लेते हैं, ठीक है। If you divide equation 1 by cos square theta, then see what will happen. If you divide this one by cos square theta, तो फिर क्या होगा, cos square theta by cos square theta, that is 1 plus sin square theta by cos square theta, which is equal to 1 by cos square theta. Yes, that is 1 plus, now do you know sin theta by cos theta is equal to what? अभी जो मैं एक्सप्लेन किया था tan theta is equal to क्या मिला था मुझे, y by x, yes or not? Tan theta is equal to y by x. What is y actually? Y is sin theta ना, and what is x? X is cos theta, already explain किया मैं. So that means instead of tan theta we can write sin by cos also, because these two are equivalent only. Sin theta by cos theta is equal to tan theta. तो मतलब tan theta के जगह में कभी कभी sin theta by cos theta भी हम लोग यूज कर सकते हैं। Okay, so if sin theta by cos theta is equal to tan theta, then sin square theta by cos square theta can be written as a tan square theta. This is equal to 1 by cos square. Forget about cos square. 1 by cos theta means what? Sec theta na? Sec theta is equal to, sec is the reciprocal of cos, so sec theta is equal to 1 by cos theta. So 1 by cos square theta can be replaced by sec square theta also. Okay, 1 by cos square theta can be replaced by sec square theta also. This is formula number 2. Sec square theta is equal to 1 plus cos square theta. ठीक है, this is formula number 2. Now I am going to derive formula number 3. मैं बोला कि फर्स्ट फॉर्मूला अगर समझ में आया तो बाकी दो फॉर्मूला खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। So for formula number 3, you divide the first one, divide the first equation by sin square theta. Now divide the first equation by sin square theta.
So if you divide the first equation by sin square theta, then see what will happen. Cos square theta by sin square theta plus 1, this is equal to 1 by sin square theta. Okay, so if sin theta by cos theta is tan theta, then cos theta by sin theta will be the reciprocal of tan. So that means cos theta by sin theta can be written as cot. तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए cot square theta लिखना पड़ेगा. So cot square theta plus 1 which is equal to now 1 by sin square theta. What is the reciprocal of sin? Cosec. So 1 by sin square theta can be replaced by cosec square theta. Cosec square theta. This is formula number 3. Okay. Cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. So this is all about the three relations. बहुत ही ज़्यादा important है ये relations. So these are the derivations. So try to solve the first one. मतलब first relation याद रखने से बाकी दो relation में कोई problem नहीं है. बाकी दो relation formula number 1 से ही derive हुआ. ठीक है? So this is all about the trigonometric और circular functions. Total 6 functions. Okay? अभी एक क्वेश्चन है कि क्या हमेशा यहाँ पे जो डायग्राम में मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया, क्या हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा? नो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है. मतलब डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, थीटा नीचे भी हो सकता है. लेकिन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो देन यू शुड नॉट राइट थीटा, यू हैव टू राइट माइनस थीटा. बिकॉज अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है तो एंगल हमेशा नेगेटिव होता है ना? तो नेगेटिव एंगल भी हो सकता है. ठीक है, दिस इज all about the positive angle because anti-clockwise direction में move हुआ था. Okay, now I am going to discuss about the clockwise direction. अगर clockwise direction में होगा तो फिर relations क्या होता है? Relations नहीं, relations will not change. These three relations will remain same. लेकिन angles क्या होता है वो अभी मैं discuss करूंगा. Okay? So till now I have discussed about the positive angles. So if I take the positive angles, so then what will happen? Cos theta is equal to x, sin theta is equal to y, tan theta is equal to y by x. Yes. Then the remaining reciprocals you know how to write. But if I take the negative angle, then see what will happen. First of all, I will write the values and then I will explain how it came. Okay. So if I take negative angles, then cos of minus theta is always equal to cos theta. Okay, I will explain why cos of minus theta is equal to cos theta. I will explain. First of all, I will write the formula values. Sin of minus theta, this is equal to minus sin theta. Tan of minus theta, which is equal to minus tan theta. Sec of minus theta, this is equal to sec theta. Cosec of minus theta, which is equal to minus cosec theta. And then cot of minus theta, this is equal to minus cot theta. ये सब values मैं लिख लिया. In case of negative angles यही होता है values. ठीक है? लेकिन कैसे आया ये सब values? Now I am going to explain this one. Okay? Again, let xo x dash and yo y dash be the two coordinate axes. Draw a circle, draw a unit circle. Unit circle means radius हमेशा 1 होगा और ये सब derivation में हमेशा unit circle ही draw करना है. ठीक है? Draw a unit circle which cuts x axis at point A, y axis at point B, x dash at point A dash and y dash at point say B dash. Okay, this is a moving point, say any point P x comma y. Now I am going to take another moving point, say Q. So P कौन सा quadrant में है actually? P is in the first quadrant. So in first quadrant we know both x and y are positive. We all know. In fourth quadrant, this one is the fourth quadrant. First, second, third, fourth quadrant. तो fourth quadrant में
हम लोगों को सबको पता है कि x हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव होता है. सो बी केयरफुल व्हेन वी राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट. ओके, चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है. P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसीलिए बोथ x एंड y आर पॉजिटिव. Q फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसीलिए x पॉजिटिव बट y इज नेगेटिव. ओके, दिस एंगल से माइनस थीटा एंड दिस वन इज थीटा. Why this angle is minus theta? Because here the moving point Q starting from OA moves along the negative y axis in clockwise direction. Since it is moving along negative y axis in clockwise direction, so that's why this angle is negative. और ये एंगल पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है. ठीक है, मैं अभी एंटी क्लॉकवाइज के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. मैं अभी नेगेटिव एंगल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा. दिस नेगेटिव एंगल्स मतलब देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ, सब में मैं नेगेटिव एंगल्स कंसिडर किया. और लास्ट पार्ट में जो डिस्कस किया था अबाउट द पॉजिटिव एंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. ओके, सो पॉजिटिव एंगल अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेगेटिव एंगल. ओके, so this one is the perpendicular m, नीचे से भी ड्रॉ कर सकते हैं m. ठीक है, so here angle AOP is equal to theta. We all know from this diagram we can say, and angle AOQ this is equal to minus theta. Why? Because it is in clockwise direction. Angle AOQ is equal to minus theta ले लिया. Okay, let the coordinates of Q be x comma minus y. The coordinates of Q be x comma minus y. Okay, is it clear this one now? Okay, now how can we define the 6 trigonometric functions? By taking the negative angle. Now cos of minus theta is equal to whatever it may be, प्लस थीटा और माइनस थीटा. लेकिन cos थीटा में क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस. जो रूल है वही अप्लाई करना है. ठीक है, आई हैव रिटन हियर cos ऑफ माइनस थीटा. दैट मीन्स नाउ आई एम कंसिडरिंग दिस पार्ट, द बिलो पार्ट, दिस ट्राइंगल. नीचे जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रहा हूं, नॉट द अबव वन. ओके, बिकॉज अबव वन अगर लूंगा तो फिर से पॉजिटिव एंगल के बारे में डिस्कस करूंगा. तो पॉजिटिव एंगल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. मैं अभी तो नेगेटिव एंगल के बारे में डिस्कस करूंगा. तो नेगेटिव एंगल कहां पे है? Below the x-axis. So now I am going to take this triangle. So from this triangle, that is MOQ, cos of minus theta is equal to base by hypotenuse. इसका बेस क्या है? OM by hypotenuse क्या है? OQ, right? Okay. OM. What is the length of OM? OM is along which axis? X-axis. So it is along positive x-axis only. और इसमें x कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव ही होता है. Yes or not? अगर if I take this triangle, the x coordinate is always positive. Only the y coordinate will be negative. So here I can write x by OQ. OQ means it is the radius of this circle, na? Here also it is 1 only. So x by 1, that is equal to x. And x is equal to what? Already first part में मिल गया मुझे. X is equal to cos theta. So we can replace this x by cos theta. So that's why cos of minus theta is equal to cos theta. This one. First part proof हो गया. First trigonometric function proof हो गया. Why cos of minus theta equal to cos theta? This is the actual explanation. Okay. Now, why sin of minus theta equal to minus sin theta? Look at here. Sin of minus theta. This is equal to P by H, that is perpendicular. Here the perpendicular is MQ और QM भी लिख सकते हो. QM by hypotenuse, that is OQ. Now QM, what should be the length of QM? QM is parallel to which axis? Y axis. तो ये होगा Y ना. QM का लेंथ Y होगा. लेकिन Q कौन सा क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट. So in fourth quadrant we have to write now minus y, not plus y. Okay? पहला केस में P फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो यहाँ पे x और y दोनों ही पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे y को माइनस y लिखना पड़ेगा. सो माइनस y बाई OQ इज ऑलवेज 1 ओनली. माइनस y बाई 1, दैट इज इक्वल टू माइनस y, विच इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज y? Y is equal to sin theta. So this is equal to minus sin theta. Okay.
So sin of minus theta is equal to minus sin theta. Similarly tan of minus theta, ये बहुत इजी है. tan of minus theta, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि tan theta can be written as sin theta by cos theta. So tan of minus theta can be written as sin of minus theta by cos of minus theta. Yes or not? So sin of minus theta का वैल्यू ऑलरेडी मिल गया, that is minus sin theta, and cos of minus theta is equal to cos theta. So sin theta by cos theta, this is equal to tan theta, but before that one minus sign is there, so that's why this is equal to minus tan theta. Okay, so tan of minus theta is equal to minus tan theta. So if you know mainly these three functions, if you know about mainly three functions, then you can write their reciprocals also. खुद लिख सकते हैं reciprocal. So cos का reciprocal क्या है? sec. So if cos of minus theta is equal to cos theta, therefore sec of minus theta, therefore sec of minus theta, this is equal to y sec theta, because sec of minus theta can be written as 1 by cos of minus theta, and cos of minus theta, this is equal to cos theta only. So 1 by cos theta, which is equal to sec theta only. So that's why we can write sec of minus theta is equal to sec theta. Similarly cosec of minus theta, cosec of minus theta can be written as 1 by sin of minus theta, and the value of sin of minus theta is minus sin theta, so that's why it is equal to minus cosec theta. Similarly cot of minus theta, cot of minus theta can be written as 1 by tan of minus theta, and the value of tan of minus theta is minus tan theta, that's why it is equal to minus cot theta. Okay, so this is the derivation of the negative angle. So if you take the negative angle, then what will happen? So positive angle के बारे में भी डिस्कस कर लिया. I have discussed the negative angle also, that is if I take minus theta. तो ये बात याद रखना है कि सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव नहीं होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे भी मूव हो सकता है. ठीक है, सो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों ही डिस्कस कर लिया. सो ये हो गया मेन पार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का. अगर ये पार्ट याद रहेगा तो बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब टॉपिक आने वाला है वो हो जाना चाहिए. ठीक है, ओके. Now I am going to discuss about the signs of trigonometric functions in various quadrant. Signs of trigonometric functions in various quadrant. ये इंपॉर्टेंट बात है ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वो बात सबसे इंपॉर्टेंट है. हेडिंग इज signs of T functions. T functions means trigonometric functions. Okay, signs of trigonometric functions in various quadrants. In various quadrants. Signs of trigonometric functions in various quadrants. So we all know this is the first quadrant, this is the second quadrant, this one is the third quadrant, and this is the fourth quadrant. ओके, इसका एक रूल है, बहुत आसान सा रूल है, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है या फिर कौन सा फंक्शन नेगेटिव होता है. सबसे इजी तरीका है कि ASTC रूल, ASTC रूल. इफ यू फॉलो दिस ASTC rule, then it is easy to remember the signs of different trigonometric functions. Okay, in first quadrant I have written A for all trigonometric functions. So that means in first quadrant all trigonometric functions are positive. A for all. Okay, in first quadrant all trigonometric functions are positive. Total 6 functions are there. So in first quadrant याद रखना all functions are positive. All 6 functions are positive. In second quadrant I have written S. S for what? S for sine and cosec. Okay, because the reciprocal of sine is cosec only, so S for sine. That means in second quadrant only sine and cosec are positive. मैं positive के बारे में बोल रहा हूं, तो अगर positive के बारे में बोलूंगा तो बाकी ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है,
So since in the second quadrant only sine and cosec are positive, which means the remaining four trigonometric functions are negative. Okay, in second quadrant. T for, in third quadrant I have written T for tan and cot, because the reciprocal of tan is cot only. So in third quadrant, tan and cot are positive. Tan and cot are positive, and the remaining trigonometric functions, remaining four trigonometric functions are negative. Okay, and in fourth quadrant, C for cos. Okay, cos and the reciprocal of cos, that is sec. So that is in fourth quadrant only cos and sec are positive, whereas the remaining four functions are negative. Okay, so ये signs of trigonometric functions in various quadrant याद रखना है. Very simple. Follow ASTC rule. ASTC. A for all trigonometric functions are positive. S for sine and the reciprocal of sine are positive. T for tan and the reciprocal of tan are positive, whereas in fourth quadrant C for cos and the reciprocal of cos are positive. Remaining functions are negative. ठीक है, टोटल 6 आर देयर. अगर दो फंक्शन इसमें पॉजिटिव है तो बाकी 4 नेगेटिव होगा. ठीक है, ऐसा ऐसे ही फॉलो करना है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन, कौन सा क्वाड्रेंट में क्या साइन यूज होता है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, राइट.